हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द निफ्टी सिटी चैनल। आप सबका स्वागत है एक बार फिर। सो एज यूजुअल वीकली वीडियो है। आई नो काफ़ी ब्रेक के बाद आना पड़ रहा है, थोड़ा काम था, थोड़ा बिजी थे, बट एनीवेज वी आर बैक। सो क्या डिस्कस करने वाले हैं एज यूजुअल हमारे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। बिकॉज फिन निफ्टी का ट्यूसडे को एक्सपायरी है। सो मंडे ट्यूसडे 2 दिन उसमें भी मिल जाएंगे हमको ट्रेड करने के लिए। सो दीज आर द थिंग्स वी गोना डिस्कस। आज स्टॉक्स नहीं डिस्कस करने वाले हैं। स्टॉक्स का वीडियो मैं ट्राई करूंगा कल एक अलग से वीडियो बनाने के लिए। स्टडी करने का मुझे भी टाइम नहीं मिला है। बट निफ्टी, बैंक निफ्टी तो डेफिनेटली वी विल डिस्कस राइट नाउ। सो एज यू कैन सी, लेट्स डाइव इन। व्हाट वी हैव हियर इज निफ्टी का स्पॉट का डेली चार्ट। ठीक है। अब डेली चार्ट पे क्या हो रहा है? नाउ यू कैन सी वी हैड दिस ट्रेंड लाइन। ठीक है, इधर एक बार रेजिस्टेंस लिया, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, अब फोर्थ टाइम भी इधर एक रेजिस्टेंस था। नाउ वे फाइनली ब्रेकआउट दे दिया था रेजिस्टेंस के ऊपर। राइट, रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट दिया, हायर लेवल्स पे गया, 18,133 का हाई बनाया, एंड देन अगेन वी हैव सीन अ स्लाइट डिप। नाउ इज दिस रिट्रेसमेंट? ओके, इधर से इधर एक एक अच्छा आया, दिस इज 38.2% रिट्रेसमेंट। इज इट दैट और is it a reversal? Okay, so how are we going to trade? We're obviously going to trade as per levels, as per price action कैसे बनने वाला है। but let's discuss a few things, a few important levels। तो उसके लिए let's go on the 1 hour chart। ठीक है, this is the 1 hour chart। now what we have here in the 1 hour chart is, you can see here कि we've had we had a nice up move and then we've had a correction. Now what is important here, how will we know that this is just a pullback, okay, not a reversal? First point is that एक तो सेकंड हाफ में रिकवरी थोड़ी अच्छी आई थी, राइट, बट आरएसआई वाज आल्सो इन ओवरसोल्ड टेरिटरी। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट ऑन मंडे विल बी, अभी फिलहाल तो एसजीएक्स निफ्टी गैप अप दिख रहा है। ओके, इट इज अराउंड 50-60 पॉइंट्स गैप अप। नाउ व्हाट वी वांट मेनली इज 17,850 होल्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर हम डेटा भी देखेंगे तो 17,900 के आसपास वी हैव गुड पुट राइटिंग। ऑब्वियसली 18,000 पे काफी अच्छी कॉल राइटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। सो इम्पोर्टेंट लेवल राइट नाउ वुड बी 17,853। इसके नीचे आई विल बिकम बेरिश। उसके बाद टारगेट्स विल बी दिस एक जोन वी हैव विच कैन एक्ट एज अ सपोर्ट, दैट इज 17,761 टू 17,720। 40 पॉइंट का ये जोन है। उसके बाद तो फ्री फॉल है, राइट। नाउ ऑन द अपसाइड, व्हेन डू वी गेट अ कंफर्मेशन कि ठीक है चलो अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं, is the moment a 15-minute candle closes above 18,034. Okay. Now, technically, what happens is this level now, this was the important resistance. Okay. This was 17,970। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस से नीचे आया, इधर काफी टाइम पास किया, उसके बाद इधर ब्रेकआउट दिया था। सो टेक्निकली व्हाट शुड हैपन इज, वंस वी हैव अ ब्रेकआउट ऑफ दिस लेवल, इट शुड गो रीटेस्ट दिस एंड मूव। अब इसने क्या किया, इसने एक काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि इधर एक बेयर ट्रैप किया है। ओके, ये इधर जो ट्रेड हुआ है ना, दिस इज काइंड ऑफ अ बेयर ट्रैप। ओके, सो नाउ व्हाट व्हाट डू वी मीन बाय बेयर ट्रैप, कि इधर सब सेलर्स एक्टिवेट हो गए ये लेवल के नीचे, और ये मंडे को सीधा गैप अप खोल के ऊपर खींच देगा, और इधर जितने भी कॉल राइटर्स थे इधर सब अटक जाएंगे। Okay, this is one scenario. Obviously, I am personally bullish, so my bias is towards the bullishness, but please trade once we get the confirmation. Okay, now let's move on to the 15-minute chart. Either directly we will check out what will be our trading plan, etc. Okay, so now the charts are in front of you, right? So levels कहाँ से लिए हमने? Obviously, this was our high। ठीक है, कल का हाई था ये फ्राइडे का, 18,034, एंड दिस वाज एक्सपायरी डे का हाई, 18,133। ओके, सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट लेवल्स। डाउन साइड पे आई हैव नॉट टेकन दिस डेज लो बिकॉज दिस इज द इंपॉर्टेंट स्विंग, 17,853। सो नाउ व्हाट इज द थिंग, दिस बेसिकली इज अ नो ट्रेड जोन। ओके, ये अराउंड 150 पॉइंट्स का एरिया जो है इधर से लेके इधर तक, ये एक नो ट्रेड जोन है। इसके नीचे शॉर्ट है, इसके ऊपर लॉन्ग है। Another trade that we can get is, for example, let's say Nifty opens flattish, okay, or little gap up, and then there is pressure, and we move down to 17,853, और इधर से reversal आ रहा है. So depending upon price action, here we can take an entry. Okay, somewhere around 17,853 के आसपास we can take an entry.
Another scenario is we open gap up, ठीक है, and directly cross this. तो जैसे ही 18,034 का लेवल क्रॉस होगा, वी कैन टेक एन एंट्री. इनिशियल टारगेट विल बी 18,133. उसके बाद के टारगेट्स विल बी दिस जोन दैट वी हैव 18,180 टू 200 के आसपास, एंड देन फाइनली 265. ओके, वाई एम आई सेइंग कि इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी डायरेक्टली निकल के सस्टेन करता है, वाई वी कैन डायरेक्टली गो लॉन्ग इज बिकॉज 18,000 सीई पे काफी अच्छी कॉल राइटिंग है, बड़ा रेजिस्टेंस है, टूटेगा तो काफी अच्छा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है. सो दिस इज आवर प्लान. ओके, क्लियर है. प्ले अकॉर्डिंग टू द लेवल्स. इसके नीचे के लेवल्स मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ लेवल्स देने में. सो राइट नाउ दिस इज द मोटा मोटी रेंज दैट वी हैव. नाउ लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी. वन सेक. Just give me a sec, guys. Okay, now we have the Bank Nifty chart. Now this is again the daily chart, okay, in Bank Nifty. तो ये सब levels अभी के लिए ignore कर दो, ये मैं detail में जाता हूँ. Now from a daily chart perspective, what we have here is again we have a similar kind of trend line like we had in Nifty, but इधर हम trend line के नीचे है, okay. तो Bank Nifty is somewhere underperforming Nifty. This was my message on Friday also कि Nifty is looking strong, Bank Nifty is looking little weak, but it can bounce back. Okay, so इधर एक रेजिस्टेंस, इधर एक रेजिस्टेंस, इधर एक रेजिस्टेंस. नाउ दिस विल बिकम द मेजर पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 1 आवर चार्ट. नाउ 1 आवर चार्ट में व्हाट डू वी हैव हियर? ओके, सो 1 आवर चार्ट में दिस इज आवर मेजर सपोर्ट एरिया. ओके, 41,095 से लेके 40,082. नाउ हियर अगेन वी कैन सी दिस वाज द क्रूशियल लेवल. ठीक है, ये एक रेंज में फंसा हुआ था. ऊपर का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट फेल, नीचे का ब्रेकडाउन दिया, और वापस अभी इधर रीटेस्ट पे आया है. ओके, नाउ वेयर कैन वी गो लॉन्ग इन बैंक निफ्टी? सो इन बैंक निफ्टी दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज अ नो ट्रेड जोन. ओके, इधर तक वी विल नॉट गेट अ कंफर्मेशन. when will we get a confirmation? We will get a confirmation moment bank nifty crosses this zone, which is 41,455 से लेके 41,570. ओके, 120 130 पॉइंट्स का जोन है. दिस जोन के ऊपर वी विल गेट अ कंफर्मेशन. व्हाई दिस जोन इज इंपॉर्टेंट? बेसिकली हियर वी हैव दिस डेज हाई. ओके, इधर एक, अगर मैं आपको 15 मिनट चार्ट पे ले जाऊं, सिंपलर. ओके, सो हियर you can see there is a small gap that we have here. Now what will happen here is this was the area where we had made a double bottom. Okay, went up, we came, took support here on Thursday. Expiry वाले दिन पे we took support here. Now this part should have held on. ठीक है, did not hold on. The next support was here, but we have dipped further. Now what is important is once we get a confirmation above this, again 41,500 के call writing बहुत ज्यादा है. ओके, सो दिस इज अ मेजर रेजिस्टेंस. इसके ऊपर निकलते ही वी विल गेट अ इजी ट्रेड अप टू 42,000. ठीक है, 500 और पॉइंट्स है, 470 480 पॉइंट्स है, विच इज अ गुड टारगेट इन बैंक निफ्टी. मेजर स्टॉक टू आइडेंटिफाई विल बी HDFC बैंक. Okay, I've kept repeating this. HDFC Bank is a very strong Bank Nifty stock right now. So keep a tab on that. Now, what is our trading plan for this particular way? Now, suppose we have a gap up, okay, in this area somewhere, then wait for this to get taken out, and then you can definitely go for a long trade. Second scenario is we open little flattish or gap down. Here, if there is any kind of double bottom that we make here and we're reversing, then a long trade will be here with a very good risk reward ratio. In case we open above this zone directly, we open here, then you can, in bank nifty, you can wait for a little retracement and then go long. Okay, now obviously if this breaks 40,880 का जो लेवल है, ये जो बॉटम लगा है, अगर ये ब्रेक हो जाता है, then I'll just move on to the daily chart to give you the level. Directly we have this low that had opened of 39,400. Okay, this is a long term target. This is not for Monday itself. Personally, if you ask me, I don't feel, मुझे लग रहा है ये कि क्योंकि ये एक, यू कैन सी इधर एक डिप दिया है नीचे, बट इट हैज क्लोज्ड बैक इन द रेंज. ओके, ये जो रेंज है इसके अंदर वापस क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी. सो आई बिलीव कि बैंक निफ्टी विल होल्ड ऑन टू 41,000 का जो सपोर्ट है, इट विल होल्ड ऑन. 41,000 पे ठीक ठाक पुट राइटिंग हुई है.
So that looks like a good support. Obviously, once we cross this major hurdle of 42,000, तो confirmation मिलेगा. But risk reward above 41,500 will be very good in Bank Nifty. Now let's move on to Fin Nifty. Okay, Fin Nifty में simple है. Fin Nifty में same thing. 1, 2, 3, 4. Okay, 4 बार ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लिया है. This trend line is going to be crucial. High we have here is 18,738. Now for the levels, what do we have? So directly take it to the 15-minute chart. Now levels, what do we have? Now we are somewhere in between. Okay, ये पूरे प्रोसेस के बीच में हम गए. नाउ व्हाट वी हैव हियर इज नीचे वी हैव 18,242 का लेवल. तो अगर ये बॉटम ब्रेक होता है 300 पकड़ लीजिए, 300 ब्रेक होता है तो 50 ऑड पॉइंट्स का रिस्क रिवॉर्ड इतना अच्छा बैठेगा नहीं. अप साइड में द मोमेंट वी क्रॉस 18,555, ठीक है, ये जो हमारा हाई लगा है फ्राइडे का, ये हाई के ऊपर निकलते ही डेफिनेटली वी कैन सी अ टारगेट. जो एक्सपायरी डे का हमारा हाई था वो टारगेट हम देख सकते हैं इन फिन निफ्टी. Clear, guys? Guys, if you haven't subscribed to the channel, please subscribe. Please like the video, share karo. Do comment if you like it. If you've not seen our strategy videos, 5 EMA, etc., please go ahead, watch the strategy videos. We also have a knowledge series. You can go and watch that. Telegram के links already bio में दिए हुए हैं. So if you guys want to join that, you can freely join the free Telegram channel as well. We have a paid version as well. You can join that as well. All right. All the best, guys. Take care.